Assalamu alaikum students. कैसे हैं आप? I'm your instructor Muzaffar Saeed and today we are going to discuss another important question of logical reasoning, that is critical thinking. Now critical thinking is not only important in your exams but it is also important in your real life. So using these lectures I'll try my best to develop critical thinking in you and that will help you a lot in years to come. So let's go to the light board and start our lecture. Hello students, we are at the light board and as discussed in the intro, today we are going to discuss another type of questions regarding logical reasoning. And today our topic will be critical thinking. Now what is critical thinking? वैसे तो इसके नाम ही से जाहिर है कि थिंकिंग लॉजिकली, थिंकिंग इन अ क्रिटिकल मैनर, कि आप किसी चीज़ को बड़े ही लॉजिकल अंदाज में आर्गुमेंट बेस्ड उसको डिसाइड कर रहे हो. तो यही बेसिकली हम करते हैं. इफ़ यू आस्क मी टू डिफाइन इट, its definition would be it is a process of separating truth from falsehood. बेसिक इसकी डेफिनेशन यही है कि हम ट्रुथ को क्या करते हैं, फॉल्सहुड से सेपरेट करते हैं और we separate possible conclusions from improbable conclusions. जो हमारी probable या possible conclusions है उनको हम improbable conclusions से भी separate करते हैं. अब होता क्या है इसमें, you are actually given a whole paragraph. A paragraph is given with certain conclusion. एक certain conclusion के साथ आपको एक paragraph जो है वो दिया होता है. In the end, you are asked to evaluate whether the conclusion is true, probably true, false, probably false, or you have insufficient data to evaluate that
कंक्लूजन। सो एक तरीका तो इसका ये होता है कि एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, एक उससे रिलेटेड एक कंक्लूजन दी जाएगी, एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू इवैल्यूएट वेदर दिस कंक्लूजन इज ट्रू, it is false, it is probably true, probably false, or you have insufficient data to evaluate whether this opinion is true or it is false. So ये एक तरीका है critical thinking के questions को पूछने का। दूसरा तरीका, second method क्या है? Two statements will be given दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको दे दी जाएंगी। On the basis of these two statements, you will be asked to evaluate whether the third statement is true or false। एक तरीका ये है कि आपको दो known facts दे दिए जाएंगे, and on the basis of these two known facts you will be required or you will be asked to evaluate whether the third statement is true, false, or even uncertain. These three options will be given to you in order to solve that problem. So in our first lecture of critical thinking, we shall be discussing about this particular type of question, and in the second lecture, inshallah, we will be discussing these types of questions. So let's start our examples, और फिर हम उसके थ्रू देखेंगे कि various examples के थ्रू कि how actually you can critically evaluate whether a statement is true, probably true, false, probably false, or you have insufficient data to prove that statement. So आए चलते हैं examples पर। Lessons, we are back with the example. I have written the complete statement and you can read it out, and then we'll discuss some MCQs regarding that particular paragraph. Although it is agreed that China is maximizing its defense budget, but there is some doubt about the total amount of defense budget. Our research shows that the annual defense budget has been increased from 31 billion in 2000 to over 120 billion in 2010. This figure is almost double the official figure presented by the government, who failed to include expenses of research and development. In 2010, America's defense budget was 400 billion. Considering this rise, China's budget may overtake America's by 2030. In addition to military spending, Chinese military has the largest number of people than any other army in the world. So here we have the statement, एक complete paragraph जो है वो हमें मिल गया। अब इस paragraph से relevant हम MCQs different करेंगे। जो statements की options हैं वो मैंने आपके लिए already यहाँ लिख दी हैं, so आप उसको हम यहीं करते रहेंगे और इस portion को हम use करेंगे for writing down our statement. The very first statement we are considering is
the figures presented by the government regarding defense budget are misleading. Now the question is, that is the first statement. हम बार बार options नहीं लिखेंगे, options हम यहीं discuss करते रहेंगे. Now the question is whether this statement is true, probably true, insufficient data, probably false or false. So सबसे पहले तो हम देखेंगे कि insufficient data, can it be an option? No, because the data has been presented in detail. बड़ा clearly, categorically हमें data जो है वो present कर दिया गया है. So by no means we can say that we have insufficient data to conclude whether it is true or false, or probably true or probably false. So we do not have any basis, any logic to say that we have insufficient data. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. Now come to the next one. False. False तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकते, and not even probably false भी नहीं कह सकते. Reason? Because in the paragraph we have been told कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है. जो official figures हैं और जो actual figures हैं उनके numbers आपस में match नहीं करते. So misleading तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब इसको बिल्कुल हम absolutely false या probably false भी नहीं कहा जा सकता. Now the real question is, इस वाली statement के हवाले से the real dilemma you will face कि इसको हमने probably true कहना है या true कहना है. This is the real question. Probably true क्या होता है या probably false क्या होता है कि where there is more likelihood, more probability that this statement will hold true or will hold false. और true or false तो we all know कि true or false क्या है कि in all circumstances जो चीज़ सही होगी that will be considered true, and in all circumstances that will be considered false वो क्या होगी false. इसमें 100% हम कह सकेंगे भाई ये बात तो क्या है गलत है. So बहुत सारे लोगों को शायद लगेगा कि इसकी जो ऑप्शन है, मैं ऑप्शन से सिर्फ लिख देता हूँ A, B, पैटर्न वही रहेगा C, D and E. In this particular question, our correct option will be option alpha. अब आप कहेंगे कि सर ऑप्शन अल्फा क्यों, probably true हम क्यों नहीं कह रहे, why we are making a clear cut statement कि it is true. बड़ी उसकी obvious सी reason है. ये देखें आपको यहाँ उन्होंने बताया that the government who failed to include expenses of research and development, because the government had clearly failed, that is why states जो उसके statistics हैं they will be misleading for sure, because उन्होंने वो चीज़ जानबूझ के ऐड की ही नहीं है. When they have deliberately not added or they have failed to add that particular expense, तो obviously defense budget के जो figures हैं they cannot be considered true. So ये आपने इस तरह से देख लेना है इसको कि it is not probably true because they have failed, clearly they have failed to add these expenses. So इसको हम probably true नहीं कहेंगे, हम इसको clear cut क्या probably true नहीं कहेंगे बल्कि clear cut true कहेंगे ऐसे. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी पैराग्राफ के मुतालिक क्या है. Chinese government has failed to include
Chinese government has failed to include expenses of research and development in their budget. It suggests that some other expenses may also be omitted from the budget. Again, option alpha, beta, Charlie, delta and eta. So here we have another statement. The Chinese government has failed to include expenses of research and development in the defense budget. Now, can we infer or can we imagine, can we assume from that fact that other expenses may also be omitted from the budget? तो इसमें ट्रू क्या होगा और फॉल्स क्या होगा, और probably true या probably false क्या होगा? Again, here we cannot assume that we have insufficient data. Insufficient data वाला सिनेरियो हम assume नहीं कर सकते. इसमें हम क्या करेंगे, और फॉल्स का भी नहीं कर सकते बिकॉज लॉजिक तो बन रही है ना, थोड़ी बहुत रीज़न इन्फरेंस तो डेवलप हो रही है, बिकॉज एक से दूसरी चीज़ क्या है, दैट इज़ क्वाइट लिंक्ड टू ईच अदर. तो फॉल्स या प्रॉबेबली फॉल्स तो नहीं हो सकते. द क्वेश्चन इज इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, यही मेन क्वेश्चन है यहाँ पे. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है. यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ प्रॉबेबली ट्रू, कि मुमकिन है, एक टेंडेंसी तो शो हो गई कि दे आर इंक्लाइंड टू ओमिट सर्टन एक्सपेंसेस. सो टेंडेंसी तो विजिबल है, बट क्या हर बार वो कर देंगे, या क्या इट इज़ अ कंपल्शन कि वो दूसरे एक्सपेंसेस भी ओमिट करेंगे? नो, आई डू नॉट थिंक सो. इट इज़ क्लियरली विजिबल कि ये कोई पेट रूल नहीं आप डेवलप कर सकते हो, थंब रूल डेवलप नहीं हो जाएगा कि एक टाइप के एक्सपेंस ओमिट किया तो दूसरे का भी हर सूरत में ओमिट करेंगे. तो ट्रू तो उस सूरत में होगा ना, और ये भी कोई आप कैटेगोरिकली नहीं कह सकते कि एक का ओमिट किया तो दूसरे का किसी सूरत भी नहीं करेंगे. तो फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स या एब्सोल्युटली ट्रू पे तो नहीं जा सकते. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा, बिकॉज इट शोज द टेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट कि एक ओमिट किया है तो हो सकता है कोई दूसरा भी ओमिट किया हो. मसलन इसकी एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हैं. इफ अ चाइल्ड इज नॉट डूइंग होमवर्क फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और वन और टू सब्जेक्ट्स, यू मे फील एंड यू मे सेंस कि उसने शायद किसी और भी सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया होगा. सो दिस स्टेटमेंट विल प्रोबेबली होल्ड ट्रू. कुछ और स्टेटमेंट्स इसी पैराग्राफ के हवाले से देखते हैं और फर्दर ऑप्शंस को भी हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं. तो आए अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं. क्वेश्चन 3 हम इसी का देखते हैं जी, और if the government has omitted certain expenses or figures from defense budget,
it may have omitted or fabricated figures and other key areas, i.e. agriculture, justice, human rights, crime rate, etc. Now there is another probability, एक और लॉजिकल कंक्लूजन हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने किसी एक सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में अपने जो फिगर्स हैं उनको ओमिट किया है, कुछ सर्टन एक्सपेंसेस ओमिट किए हैं या प्रॉबेबली हमें सही फिगर प्रेजेंट नहीं किए, तो इट इज़ पॉसिबल कि उसने बाकी के जो एक्सपेंसेस हैं अपने या बाकी के जो सेक्टर्स हैं उसमें भी अपने एक्सपेंसेस या अपना जो डेटा है वो हमें प्रॉपर्ली, अपने फिगर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट ना किए। ठीक है, अब यहाँ फिर आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, इट इज़ नॉट अबाउट ट्रू और प्रॉबेबली ट्रू, ऑल्दो कि आपको लग यही रहा होगा कि सर जैसे हमने पिछले में किया है कि अगर उसने एक में छुपाया तो प्रॉबेबली उसने बाकी चीज़ों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, बट हियर we do not have any data regarding human rights, crime rate, justice, agriculture. We do not have any budget, we do not have any figures, we do not have any data. तो जब ये चीज़ें हैं ही नहीं तो इसलिए फिर हम इन चीज़ों पे कोई इवैल्यूएट भी नहीं कर सकते। लास्ट हमने इसलिए इवैल्यूएट कर लिया था कि जिस चीज़ से डिफेंस से रिलेटेड वो चीज़ें पूछ रहा था, डिफेंस से रिलेटेड सारे के सारे बजट्स और सारे के सारे फिगर्स जो थे वो हमारे पास मौजूद थे, बट हियर वी डू नॉट हैव एनी डेटा रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, क्राइम रेट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, वी डू नॉट हैव एनी डेटा. सो हियर our right option will be option C, that is insufficient data. ठीक है, क्योंकि insufficient data ही हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिकॉज इन चीज़ों के बारे में हमें उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ. सो आए अब चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका देखते हैं चल के. If there is a difference between the real figures and official figures, it may be because of a clerical error. अगर रियल फिगर्स में और प्रेजेंटेड फिगर्स में, ऑफिशियल फिगर्स में डिफरेंस आ रहा है, कोई एनॉमली आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, तो ये फ़र्क किसकी वजह से हो सकता है? ठीक है, क्लरिकल एरर की वजह से हो सकता है. नाउ वी कैन नॉट से विद एनी सर्टेनिटी इट इज़ ट्रू, because
इसके तो हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं. We do not have any record कि कोई क्लैरिकल डेटा का या इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का कोई जिक्र हो. We have nothing like that. Probably true भी हो सकता है, but we'll evaluate कि है या नहीं है. Insufficient data तो नहीं कह सकते, because we are only talking about the defense budget, तो उसके related तो हमारे पास sufficient data available है. And now we cannot say कि it is absolutely false. Absolutely false और absolutely true तो हम नहीं कह सकते ना, because we do not have any strong और clear cut evidence जिसके बेस पे हम कह दें कि नहीं भी बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल गलत बात है. So हम ये तो नहीं कह सकते. So it can be either probably true और probably false. दो चीज़ें होंगी. Probability में जाएगा because हमारे पास कोई clear cut evidence नहीं है इसको negate करने का या इसको accept करने का. So अब हम आते हैं कि probably true और probably false में से what should we select? You can understand that the defense budgets or the figures for the budgets are prepared with utmost of care. So it is impossible or probably not possible that these errors are because of the clerical error, number one. Number two, they have been published, they have been printed, they have been announced. तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, उस वक्त तो क्लैरिकल एरर नहीं था. इफ़ देयर वाज अ क्लैरिकल एरर अगर हम उसको मान भी लें कि किसी वक्त में क्लैरिकल एरर जो था वो एग्जिस्ट करता था, तो इवन देन जब उसको प्रेजेंट किया जा रहा था इट शुड हैव बीन रेक्टिफाइड. सो दिस स्टेटमेंट इज प्रोबेबली फॉल्स. वी कैनॉट से विद complete authority that it is false, but it seems logically impossible or it seems logically incorrect कि भाई सिर्फ clerical error की वजह से इस तरह का कोई problem हमें आ सके. So in this particular question our option will be delta, that is probably false. So अब next बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि उनके आंसर्स क्या होंगे. Now we have another question of this chunk, that is question 5. In 2010, America's defense budget was much lower than Chinese. Now this statement is evident. It involves figures, it involves facts. इसमें हमें probably true और इस तरह से जानने की ज़रूरत ही नहीं है. इसमें हम क्या करेंगे? We have the figures that in 2010 the annual defense budget of China was 120 billion, while in 2010 America's defense budget was $400 billion. So we know that America's defense budget was much higher than China's defense budget. So this statement is absolutely false. This is not a true statement. This is a completely false statement. So इस तरह से आपने देखा कि considering this paragraph, we created 5 different scenarios in which each one of them was different from each other. पहले में हमने देखा कि the first statement was true, although it seemed that it is probably true, but it was true.
Then the second one was probably true. The third one, in the third statement we were having insufficient data, and the fourth statement was probably false, and the last one was absolutely false because we had the figures, we had the data, and we could conclude without any doubt that this statement is false. So इस तरह से आपने इसको देखना है. एक और एग्जाम्पल आपके लिए करते हैं और फिर हम देखेंगे उस से रिलेटेड, उस पैराग्राफ से रिलेटेड कि किस किस तरह से हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे 4-5 डिफरेंट सिनेरियोज बनाएंगे. सो आए चलते हैं उस नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. Ladies students, we have another example for you. A detailed statement is mentioned here and then we'll solve questions related to that statement. पहले statement पढ़ते हैं. Turkey is a surprising addition to the list of rapidly growing economies. Its economy increased quite rapidly in 2011 at the rate of 8.5%. But such rapid growth leaves worries regarding possible side effects. For instance, in 2011, Turkey's inflation rate was well above that of its peers. Secondly, there is increasing concern regarding Turkey's growing dependence on foreign capital. A large portion of Turkey's banking system is part owned by banks within the Eurozone. As the single currency falters, such a dependence raises questions about the stability of the Turkish growth. अब इसके मुतालिक हम क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर हम देखेंगे कि ये सही है या गलत है या जो भी 5 स्टेटमेंट्स हमने लिखी थी. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट. क्वेश्चन 1. There is a concern that Turkey's growth is at the risk of faltering after 2011. Now let's talk about this statement, that if the statement is true or false. अब clearly हमें यहाँ पर बताया हुआ है उसने, this rapid growth leaves side effects regarding leaves worries regarding possible side effects. ठीक है. और फिर उसने नीचे बताया भी है कि inflation rate was much higher than above the peers. So this growth will not be sustainable. तो ये concern तो जो है ये मौजूद है and this concern is 100% true. So out of these options, our correct option will be alpha, true. अब एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि सर हाउ कैन वी से कि जी ये खदशा दुरुस्त है या नहीं है, दिस कंसर्न इज जेन्युइन और नॉट. मतलब ये कंसर्न ये भी तो हो सकता है ना कि दिस कंसर्न इज नॉट द राइट कंसर्न एंड देन वी मे थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज प्रोबेबली ट्रू. बट रिमेंबर, read the statement again. We are not talking about whether this concern is true or not. We are only talking about whether there is this concern or not.
हम ये तो कह ही नहीं रहे कि ये कंसर्न सही है या गलत है, हम तो ये कह रहे हैं कि ये कंसर्न मौजूद है या नहीं है। तो वो कंसर्न तो ऑब्वियसली मौजूद है। सो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट प्रॉबेबली ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज उसने क्लियरली बता दिया कि ये कंसर्न, ये परेशानी जो है वो मौजूद है। लीव्स वरीज का मतलब है कि कंसर्न तो डेफिनेटली मौजूद है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। As Turkish banks are part owned by the banks within Eurozone, they may face problems if banks in Eurozone face financial crisis. Alpha, beta, Charlie, delta and eta. So अब ये स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है, बिकॉज दीज बैंक्स, द मेजॉरिटी ऑफ द टर्किश बैंक्स आर पार्ट ओन्ड बाय द बैंक्स विद इन यूरोजोन, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, वो ये कह रहा है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जब उन पे अगर क्राइसिस आएगा, यूरोजोन के बैंक्स पे क्राइसिस आएगा, तो टर्किश बैंक्स भी उससे सफ़र करेंगे। नाउ दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी होल्ड एब्सोल्युटली ट्रू। लिंक तो बन रहा है बट एब्सोल्युटली ट्रू नहीं हो सकती, बिकॉज दे आर ओनली पार्शली ओन्ड। ठीक है, दीज बैंक्स आर नॉट फुली ओन्ड बाय द बैंक्स विद इन यूरोजोन, तो फुली ओन्ड तो नहीं है, नंबर वन। नंबर टू इज, the second factor is that they are actually working in two different economic zones। तो ज़रूरी तो नहीं है कि यूरो जोन में अगर क्राइसिस आया तो टर्की भी उससे सफ़र करेगा, तो मोर और लेस उससे मुतासर तो हो सकते हैं। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट दे विल सफ़र, but there can be a logical inference between these two, but we cannot say with any guarantee, we cannot say with any surety that they will definitely suffer. So ये true तो नहीं होगा, it will not hold true in all cases, but we can say that this scenario will probably be true, because if 50% of the shares are held by the banks within Eurozone, if they suffer, the Turkish banks or Turkish banks may well also suffer the financial losses, and they may also suffer that financial crisis. So option alpha नहीं होगा, यहाँ पर हमारा option क्या होगा? Our option will be option beta. कुछ और फर्दर एग्जाम्पल्स करते हैं इन्हीं स्टेटमेंट्स के हवाले से, तो फिर देखते हैं कि बाकी स्टेटमेंट्स क्या सिनेरियो क्रिएट करती हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चंक। Turkish banks are part owned by banks within
Eurozone and provides greater variation to the market and extra finance to the economy. Now, again, we have the same 5 scenarios. If we look at this statement that Turkish banks are part owned by banks within Eurozone and this provides greater variation to the market and extra finance to the economy. Nothing has been said regarding that. इस चीज़ के मुतालिक जो है कुछ भी हमारे पैराग्राफ में नहीं कहा गया. We haven't been told anything about it कि ये ऐसा है या नहीं है. So probably हमारे पास इसमें जो ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन है that is our option C, and that is insufficient data. We require more data to verify or to attest to say with any conformity that this statement is true, false, probably true, or probably false. So we need more data and we need more facts and figures and statistics to verify or reject that statement. So इसलिए we are choosing option 5. Now we are moving to another question. That is question number 4. Turkish banks are part owned by banks within Eurozone, as this provides greater links with European banks and helps their ascension into European Union. Now we have another statement that these banks are linked or they are part owned by the European banks because this will help them have more economic ties with the European banks, and these ties will help their accession to the European Union. Now this statement is obviously true तो नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है, probably true भी नहीं हो सकता, then insufficient data भी नहीं हो सकता because we know that these banks are part owned by European banks. So this statement is probably false. We'll go for option delta. Why should we go for option delta? बड़ी obvious उसकी reason है. Obvious उसकी reason ये है कि we have not been told कि जो यूरोपियन यूनियन में एडिशन है
उसके बेसिस फाइनेंशियल आपके लिंकेजेस हैं या फाइनेंशियल टाइज हैं विद द यूरोपियन बैंक्स. सो दिस इज नॉट द बेसिस ऑफ ascension into European Union, because that thing is a political matter. वो एक political decision है, उसका ताल्लुक जो है वो economic decision से as such directly नहीं है. So economy actually has no role to play or has a very insignificant role to play as far as this paragraph is concerned. इसमें ऐसे हमें कुछ नहीं बताया हुआ, आपने अपनी समझ बूझ लड़ाने की कोशिश नहीं करनी. उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली देखें कि we have not been told that these two things are linked to each other, and because these two things are not linked to each other, so this statement we cannot say with absolute guarantee that it is absolutely false, but we can predict that this statement is probably false, क्योंकि इन दो चीज़ों का आपस में कोई बज़ाहिर ताल्लुक नहीं बताया हुआ. सो अब हम चलते हैं अपने इस चंक के लास्ट क्वेश्चन पे. नाउ वी मूव ऑन to the fifth and final question of this chunk, and that is the economy of Turkey was absolutely stagnant during 2011, and the options are alpha, beta, Charlie, delta and eta. We are following the same pattern. अब वो क्या कह रहे हैं कि टर्की की जो इकोनॉमी थी 2011 में स्टैग्नेंट थी. स्टैग्नेंट मीन्स इट वाज टोटली डल एंड ड्रैब and nothing was happening in 2011. Now this is an absolutely incorrect statement. Why? Because we have been clearly told its economy increased quite rapidly in 2011 at the rate of 8.5%. So चूँकि हमें बता दिया गया, यहाँ पे clearly बता दिया गया कि इकोनॉमी जो थी that was not at all stagnant, that was increasing, that was expanding at a very rapid pace. So this statement is absolutely false. So you have got an idea कि किस तरह से हमने जो known facts हैं उनको false या true करने, और जो in between है ग्रे एरियाज में उनको हमने देखना है कि वो probably ट्रू की तरफ जाते हैं या probably false की तरफ जाते हैं. And if there is no mention of data or statistics or facts or figures, then we'll choose the option C, that is insufficient data. जैसा कि हमने अभी इसमें किया था कि because they are partly owned by the banks within Eurozone, they'll get more financial assistance or it will create more variation in the market. Nothing was told about it in this particular piece of writing. That is why we chose insufficient data. So hopefully कि आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो clear होगी होंगी. But let's have another example before closing this lecture, और देखते हैं कि और different scenarios भी कुछ create करते हैं और देखते हैं कि हमारी options क्या बनती हैं. Let's students, we have another case study, another statement for you, और फिर हम देखेंगे कि statement पे हम क्या questions generate करते हैं. Our country needs about 9 to 10% of the yearly increase in power capacity. That means from the present 40,000 megawatt we have today, we require an additional 4,000 to 4,500 megawatt every year. The private industries or foreign companies may contribute by 1,000 to 2,000 megawatt. That means 50 to 75% of the capacity addition will have to be done by the public sector. But government cannot continuously give money for it. This means that the tariff has to be regulated to generate money, not based on the cost of 25 years ago. If this happens, optimum utilization of the power will take place. It will not be
वेस्टेड। सो हम इस पे जाएंगे और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। Presently, is wasted as the tariff is too low. And the options are alpha, beta, Charlie, delta, and finally we have eta. अब इसको देखिए, क्लियरली आपको समझ आ रही है लास्ट लाइन। वो कहते हैं कि the tariff has to be regulated, and if this happens, it will ensure optimum utilization of power. ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर टैरिफ रेगुलेट हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकती है। इट मीन्स कि सम ऑफ द पावर इज बीइंग वेस्टेड, और आगे उसने क्लियरली और भी कर दिया कि इट विल नॉट बी वेस्टेड, क्लियरली हमें बता दिया। सो द राइट ऑप्शन इज ट्रू। अब एक आर्ग्यूमेंट आप यहाँ ये बिल्ड कर सकते हो, शायद बहुत सारे बच्चों के जहन में आए भी कि सर सारी वेस्टेज जो है वो टैरिफ की वजह से तो नहीं है, तो हाउ कैन वी से कि दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्वेश्चन आ सकता है ना आपके जहन में कि ये सारी की सारी शॉर्टेज जो है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लो टैरिफ, तो हाउ कैन वी से कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, इट मस्ट बी प्रोबेबली ट्रू। तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले आपने सोच लेना है कि वो कह रहे हैं कि सम पावर इज वेस्टेड। वो ये तो कह ही नहीं रहा क्वेश्चन में कि ऑल द पावर इज वेस्टेड, ये ऑल वेस्टेज इज ड्यू टू लो टैरिफ। वो कह रहे हैं सम पावर इज वेस्टेड, तो सम पावर तो ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, क्योंकि अगर सम पावर ना उस पर हो रही होती तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहा होता। So, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है दैट इज नॉट प्रोबेबली ट्रू, दैट इज ट्रू because we are not talking about all the wastage in power sector, we are only talking about some wastage in the power sector, and some wastage is definitely due to the low tariff. So इस तरह से आपने इसको देख लेना, एक एक वर्ड मैटर करेगा, और एक वर्ड को अगर आप चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं सम की जगह फॉर एग्जांपल ऑल कर दूं, तो फिर ये क्या होगा, दिस स्टेटमेंट विल प्रोबेबली बी फॉल्स, बिकॉज सिर्फ एक चीज़ उसने कहा कि वेस्टेज थोड़ी सी इसकी वजह से भी है, तो सारी की सारी वेस्टेज तो इसकी वजह से नहीं है। सो दिस इज हाउ अ सिंगल वर्ड कैन चेंज योर ऑप्शन फ्रॉम ए टू डी और बी टू सी या वट एवर, जो भी चेंज आ सकती है, वो एक वर्ड भी क्या करेगा, पूरे के पूरे सिनारियो को शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। The public sector companies have done a commendable job in power sector. This is the second question, and same options we have A, B, C, D and E, and you can relate these options to true, probably true, and sufficient data, probably false or false. अब इसमें आप क्लियरली देख रहे हो और कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर हैज डन अ
commendable job. If it has done so, अगर उसने ऐसा किया होता तो फिर प्राइवेट सेक्टर की इंक्लूजन की ज़रूरत ही नहीं थी और फिर आपको जो है वो पावर शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है वो भी फेस नहीं करना पड़ना था, नंबर 1। और नंबर 3 क्लियरली वो मेंशन कर रहा है कि इट कैन नॉट कंटिन्यूसली गिव मनी फॉर इट, मीन्स इट हैज़ मेड सम एफर्ट, ठीक है, बट उस एफर्ट को कमेंडेबल कहना दैट विल प्रोबेबली बी फॉल्स। कंप्लीटली फॉल्स नहीं कहेंगे, बिकॉज कंप्लीटली फॉल्स इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज स्टिल जनरेटिंग 50 to 75% ऑफ द टोटल पावर जनरेशन। सो वो तो कर रहा है, तो 50 to 75% एक बहुत अच्छी है, बट इसको ये कहना कि दैट इज़ अ परफेक्ट एफर्ट और दैट इज़ अ कमेंडेबल एफर्ट, ये शायद थोड़ा गलत होगा। So this statement is probably false, because if you are inviting the private sector, if you are including the private sector, or if you are facing the power shortage, then probably it is hard to believe that the public sector has made a commendable effort or the public sector has done a commendable job. So our right option will be option delta. So कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि इस सिनारियो में वो एग्जाम्पल्स कैसे फिट इन होती हैं। लीजिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द प्राइवेट सेक्टर इज नॉट विलिंग to install major plants for power generation। So ये स्टेटमेंट किस हद तक ट्रू है और किस हद तक फॉल्स, इसमें आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर and the foreign companies, they are already providing us 1000 to 2000, so they are actually contributing 25 to 50% of the total power। so अगर वो इतना ज़्यादा contribution कर रही हैं तो this statement is probably false, because अगर वो इतना ज़्यादा contribution कर रही हैं तो obviously such a massive contribution cannot be made by using small power generation plants। इसके लिए obviously वो क्या कर रही होंगी, major power generation plants ही install कर रही होंगी। so we cannot say कि ये statement जो है वो true है या ये statement जो है वो probably true है, this statement is probably false, ठीक है। कंप्लीटली फॉल्स क्यों नहीं कह रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्कान मौजूद है कि हो सकता है कि दे विल बी मोर रिलेक्टेंट बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन फ्यूचर there is a possibility that tariffs may be increased, कि फ्यूचर में मुमकिन है कि टैरिफ्स जो है वो क्या किए जाएं, इंक्रीज कर दिए जाएं। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा एंड ईटा, it feels that alpha is the right option, that this statement is absolutely true। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे मुमकिन है, कि absolutely true कैसे है, it must be probably true। Again, look for the key word, we are only talking about a possibility। ये possibility तो 100% मौजूद है ना,
because the public sector is not affording that power generation at this current rate. तो वो चूँकि अफोर्ड ही नहीं कर रहे हैं, they cannot continuously give money as well. That is why possibility तो 100% मौजूद है कि वो क्या करेंगे, अपने इस टैरिफ को इंक्रीज करेंगे, अपने इस टैरिफ को रिवाइज करेंगे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कन्फर्मिटी, हम कह रहे हैं पॉसिबिलिटी. तो यस, पॉसिबिलिटी तो इसमें 100% पॉसिबिलिटी जो है वो मौजूद है. दैट इज वाई आई एम सेइंग कि दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू. लास्ट वन देखते हैं इसी का. If we attain 10% annual increase in power capacity, we shall have no problems in this sector. कि अगर हम एक दफ़ा 10% एनुअल इंक्रीज इन द पावर जनरेशन और इन द पावर कैपेसिटी हासिल कर लें तो फिर हमारे लिए जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. बिकॉज हम यहाँ क्या कह रहे थे, हम यहाँ कह रहे थे क्या कंट्री नीड्स 9 to 10% of yearly increase, and if that 9 to 10% increase is ensured, obviously we do not have or we should not have any problem in future regarding power generation. So it is quite safe to say that this option is absolutely true. So hopefully इस एग्जाम्पल के सारी जो MCQs हमने किए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. लें जी, that is it for today. I do hope that all of you would have understood what was taught to you in this lecture. But if you have any question, any query, use this comment box and ask all what you want to ask. I'll be eagerly waiting for your questions and for your queries. मिलते हैं अगले लेक्चर में. Till then अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. जीते रहें, खुश रहें. अल्लाह हाफ़िज़.